हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वाइज आईएएस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोसाइटी। सोसाइटी इन इंडियन कंटेक्स्ट। आपके जीएस 1 में और इवन यू कैन सी इन जीएस 2 सोसाइटी का बहुत मेजर रोल है। बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल सोसाइटी टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत आसान, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको कुछ फॉर्मल चीजें रटने की जरूरत नहीं, आपको रटाफिकेशन की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड यू कैन फ्रेम योर आंसर इन योर वर्ड्स, प्रोवाइडेड you have to quote some real life examples too. तो बेसिकली सोसाइटी का जो टॉपिक है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी और सोसाइटी के फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। किसी भी शब्द का अर्थ जानने से पहले उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानना हमें उस शब्द के बारे में और क्लैरिटी देगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी करेंगे, उसके बाद हम सोसाइटी का मतलब समझेंगे। अगर आपने अभी तक वाइज आईएएस का ऐप डाउनलोड नहीं करा है, यू कैन गो टू द प्ले स्टोर, द गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर and download the Wise IAS app today. By downloading the app, you can have access to many of the features available on the app. This is what we offer. So, starting with the characteristics of Indian society. अगर हम लेस डाउन करना चाहें इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, तो देर आर इन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत सारे फीचर्स हैं, हम उनको लिमिट नहीं कर सकते, पर कुछ मेजर फीचर्स हमने यहाँ लिखे। इट इज अ मल्टी एथनिक सोसाइटी, इट इज अ मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, इट इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, it is a multi caste society. There is unity in diversity in Indian society. Patriarchal system, patriarchal society, tribes, family, kinship system are some of the major features. The balance between spiritualism and materialism, the balance between individualism and collectivism, coexistence of both traditionalism and modernism. एक एक करके हम इन फीचर्स को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से समझेंगे। सो द इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टी एथनिक सोसाइटी। मल्टी एथनिसिटी इज अ मेजर salient feature of Indian society. As ethnic group or ethnicity is a category of people who whose identity is similar, जो बराबर एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं अपना, उसको एथनिक ग्रुप कहते हैं। दैट एथनिक ग्रुप कुड बी बेस्ड ऑन एनी कल्चर, ऑन एनी लैंग्वेज और एनी रिलीजन और टैलेंट, एनीथिंग। यूजुअली इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, डायलेक्ट, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और नेशन। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एथनिक ग्रुप हैं जो को एग्जिस्ट करते हैं, और हर एक ग्रुप की विचारधारा को दूसरे ग्रुप की विचारधारा से मेल खाना बहुत जरूरी नहीं है। तो मल्टी एथनिसिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टी एथनिक सोसाइटी। द नेक्स्ट इज योर multilingualism. We have the schedule that lists down some of the languages. There are some official languages.
इंडिया इज होम टू मैनी नेटिव लैंग्वेजेस। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉमन दैट पीपल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड मोर देन वन लैंग्वेज। इवन आई डू नो, आई डू स्पीक एंड आई डू write and I can understand four languages. So there are different scripts. यदि आप हिंदी देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, गुजराती देखेंगे, पंजाबी देखेंगे, तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका आप को रिलेशन हिंदी से कर पाएंगे या संस्कृत से कर पाएंगे। द स्क्रिप्ट, हाउ अ लैंग्वेज इज रिटन, देर इज अ इंटर रिलेशन, देर इज स्लाइट चेंज इन द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज, और वो एक नया लैंग्वेज बन जाता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, बहुत पुरानी पुरानी लैंग्वेजेस है। पहले तो उर्दू बोली जाती थी, फिर बाकी की लैंग्वेजेस, और हिंदी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। सो हमारे पास बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं। इवन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, the state reorganization committee was formed to reorganize state on the linguistic lines. There was a great demand to make a state on linguistic lines. Sometimes it happened and sometimes it didn't. So India is home to many of the languages. People speak many languages, they understand many languages. Even a person can know more than one language. There is a concept of mother tongue. Mother tongue is a language which is first, the very first language जो एक इंसान को सिखाई जाती है, उसको पढ़ाई जाती है और उससे कम्युनिकेशन करी जाती है उस लैंग्वेज। दैट इज द मदर टंग, राइट। देन नेक्स्ट इज इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। इंडिया इज होम टू मेनी ऑफ द रिलीजन्स। द वर्ड सेकुलरिज्म, in the preamble, the word secular. So there was an intention to make India a home to many and all of the religions of the world. In India today, many religions coexist. These religions have different beliefs, practices, rituals, and rites, ceremonies, institutions. Even they coexist. Many of the major religions of the world. Now, even they have different faiths. There are times when these religions are seen in clashes with one another. Even then, the country, India as a nation, is able to recover from those clashes. Even then, today, these religions coexist. हमने स्लोगन सुने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। तो इस तरीके से ये धारणा हमारे अंदर बनाने की बचपन से ही कोशिश करी जाती है। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। वी हैव अ फंडामेंटल राइट, एवरी सिटीजन हैज अ फंडामेंटल राइट, practice, profess, and propagate any of the religion of his own choice. So these religions coexist together. There is a caste system in society. For example, in Hindus, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरीके का कास्ट सिस्टम इंडिया की सोसाइटी में देखा जाता है।
The social division of the society in India is peculiar. Unlike many other civilizations in the world, where the society was divided into race, ethnicity, or clans, Indian society is broadly divided into hierarchy of caste. कौन सबसे ऊपर कौन सबसे नीचे और बीच में कौन. तो इस तरीके से इंडिया में कास्ट सिस्टम है. काफी एफर्ट्स करे जा चुके हैं इस कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए. काफी एफर्ट्स करे जा चुके हैं इस कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट करने के लिए. काफी एफर्ट्स करे जा रहे हैं ताकि ये कास्ट सिस्टम ना बन गए. Even then, today you can see in your daily life the caste system exists. Some of the work is to be done by the people of one caste only, and some of the work is to be done by the people of upper caste. There is a system of upper caste and lower caste. Now, next is unity in diversity. In India, there are many religions, there are many languages, there are many cultures, there are racial diversities, geographical diversities. In spite of these diversities, we have unity in diversity. In India, people of different religions have confined to respect the ideals and values of people of other religions and of other cultures. And hence, India has always stood up as an integrated nation, ready to put its arms around everybody in the world. So, we welcome everyone, everything with open arms. There is unity in diversity. नो मैटर आप अपने पड़ोसियों से कितने भी नाराज हो, किंतु यदि वो किसी मुसीबत में हो तो आप उनके साथ खड़े हो. राइट. इंडिया में इसी तरीके से अगर नेशनल लेवल पे कोई आपदा आती है या अदरवाइज ऑल्सो, वी हैव यूनिटी, वी हैव अ सिंगल unity feeling. For example, in a cricket match, every Indian wants the team India to win. The next is family and kinship. Blood relation and kinship ties enjoy a strong hold over other social relationships in India. जो फैमिली रिलेशन है ये किसी भी रिलेशन से ऊपर माने जाते हैं. फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन. Most of the world's population lives in family units. The family is a primary institution and it is responsible for socialization. Earlier, there was a concept of joint family, and now there is a concept of nuclear family. The next is tribes. India is house to nearly 705 scheduled tribes, and they contribute to 6% of the population of the country, according to the 2011 census. ट्राइब्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. जियोग्राफिकल एरियाज, जो कि इंडिया के सेंट्रल इंडिया में और इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज. दो तरीके से हमने ट्राइब्स को डिवाइड करा बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. एक तो सेंट्रल इंडिया एंड दैट नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. पंजाब इज द ओनली स्टेट दैट don't have any of the scheduled tribe. MP is the state, I think so, which is having the maximum population of scheduled tribes. The next is there is a balance between individualism and collectivism in Indian society. India is a society with both collectivistic and individualistic traits. People are self
centric. People are selfish, but there is collectivism. The collectivistic side means that there is a high preference for belonging to a longer social framework in which individuals are expected to act for the greater good of their defined interests. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे देखते हैं लोग जो समाज के लिए उठ के आगे आते हैं, समाज की बेहतरी के लिए आगे आते हैं. Coexistence of traditionalism and modernity in the Indian society. ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी दोनों को एग्जिस्ट करती है. इंडिया में ट्रेडिशनलिज्म को बड़ा संजो के रखा जाता है, स्पेशली इन द चेंजिंग टाइम, which is the salient feature of Indian society. Indian society will always be in a transition continuously, and it is continuing a rapid change. It implies idea of constant change in intrinsic to contemporary Indian society. For example, in the past, everyone used to carry currency notes and currency with themselves wherever they are going. And in today's era, everyone, mostly, nearly everyone, is having that Google Pay or Paytm like apps for payment making mechanism. Most of the payments are made online through UPI. So there is a modernity in the traditional Indian society. There is a rapid change. Earlier, having a telephone in the whole mohalla was a rare thing. Now, everyone, a rickshaw driver, a manual labor, or a billionaire, everyone is having a smartphone. Almost everyone is having a smartphone. So there is a modernity in traditionalism. Everyone in today's era is having a WhatsApp account, right? So if we try to conclude, Indian society is a result of journey from the Indus civilization to today's globalized world. In this journey, it has gone through many transformations under the influence of outside world and reform movements within the society. However, what is unique and appreciable is the fact that if it has managed to adopt and accept various features while preserving the past. हम चेंज हुए हैं, बदलाव आया है, पर हमने अपने कल्चर को, अपने पास्ट को संभाल के रखा. There are many factors out there threatening the unity of the Indian society, but India has the strength to overcome communal violence, religious threats, the common values of democracy, equality, and justice, as defined in the Constitution in the part of the value system of Indian society. So, likewise, the Indian society is a mixture of many things. Indian society in itself constitutes different subgroups. You can divide these groups in many non-uniform segments. For India as a whole, there is unity in diversity. There is unity in diversity. So, these were the
characteristic features of the Indian society. I hope you like this lecture. Thank you. Have a nice day. See you in the next lecture.